Welcome, everyone. Thank you for joining us for today's webinar. I'm Ria from Webtel, welcoming you to this live session on the recent changes in Table 4 of GSTR 3B applicable from September 2022, which is a new way to show ITC. As we all are living in the era of digitalization, where everything from simple to complex demands ease with technology, that is why Webtel believes in making IT a way of life. We are among the leading e-compliance companies in India, known for our compliance management, office management, and HR management solutions. We have incorporated a knowledge academy as well, where you can do all your learning by opting for self-paced courses, staying in line with the blogs, keeping pace with webinars, etc. Today, we are presenting a webinar on recent. Today, we are presenting a webinar on recent changes in Table 4 of GSTR 3B applicable from September 2022, which is presented by our product expert, CS Nikita Singh. Now, allow me to introduce you to our speaker of the day. Nikita Singh is a qualified company secretary and has completed her LLB as well. She is also a postgraduate from Delhi University and has over 7 years of experience in direct taxation. She is associated with Webtel since 2017 and is a WEBGST software expert. Just a little housekeeping before we get started. If you have any questions during the webinar, please type them in the chat box. We will be taking the same at the end of the webinar. Now, without further ado, we will turn the time over to our speaker, Nick. Hello everyone. So just a second. Hello everyone. Hello everyone. So we are starting our session now. So let me, sorry for the delay, there was some technical glitch. So now I'm sharing my screen. Okay. So now we are talking about GSTR 3B, the changes which are made in GSTR 3B recently. So for that, let me take you to my screen now. Yeah.
So now talking about GSTR 3B in pursuance of 47th GST Council meet, which was held in Chandigarh on 28th and 29th June, one notification and circular was issued by the government. Notification number 14/2022 Central Tax dated 5th July 2022, and the circular number is circular number 170/02/2022 GST dated 6th July 2022. So as you can see on my screen also, the government-wide the said notification has notified few changes in Table 4 of Form GSTR 3B, which is related to ITC, and the changes are made for enabling the taxpayers to correctly report information regarding ITC availed, ITC reversal, ineligible ITC in Table 4 of GSTR 3. Now, these changes are effective from our GSTR 3B for the month of October 2022 onwards. That is the August return, which we are filing in September. The changes are applicable from this month only, like the 3B which we are filing in this month. So now it becomes very important for us to understand that what changes are made and like what will be its impact on the process of preparation of data, accounts book, etc. Now I'll just firstly show you the form in which we are currently filing. Like before August, the form 3B form in which we were filing used to look like this. Here I'm just showing you the table number 4 only because major changes are in this only. So in ITC available, you can see the fifth part here, all other ITC is coming. Now in new table also, all other ITC, the description is same, but the data which we were reporting earlier is changed here. So that's why I've highlighted, because the major impact will be in all other ITC only. So in this head, the data which we were earlier like inserting in this particular head, this is now changed. What changes are made, we will be discussing like now after this discussion about this table. We'll be discussing all those things. Now our 4B part relates to ITC reversal. So earlier what we used to do was we used to enter the all other ITC in 4A5, and in reversal we used to reverse the ITC of Rule 42 and 43 in B1, and if any other reversal was required, we used to enter it in 4B2. Now we used to get net ITC available, and then after that in 4D, ineligible ITC was reported. In that also we have two sections as per section 17.5 and others. So as like all of you must be knowing that section 17.5 talks about the ineligible ITC which we cannot avail. So but the main point which is to be noted over here is that this section 17.5 data was not earlier added in all other ITC. This was just an intimation that we are telling the government that I have this much of ITC which is ineligible. But after that, in case we used to have any other ITC, ineligible ITC other than section 17.5, that used to come in others. Okay, so in net ITC available, there was no effect of ineligible ITC. That is D part in that as per section 17.5. Now moving to our new table in which we have to file now. In this table, 4A, 1, 2, 3, 4 are same. There are no changes in that. Okay, and in 5, we are inserting all other ITC. So description, as I told you, is same in all other ITC also. But the data which we have to insert now is very different. Okay, so all the calculations are because of this calculation of ITC only. Now talking about ITC reversal, you can see over here as per rules 38, 42, 43 and section 17 subsection 5. Now point here to be noted is that earlier rule 38 was not there. Okay, as you can see on the screen, 42 and 43 of CGST rules are coming. Now rule 38 is also added, and section 17.5, which we used to report in table 4D1, that is here, is now reported in 4AB. So what is the meaning of that?
as we know that in all other ITC, we just subtract the ITC reversal and then we get net ITC available. But earlier 17.5 used to come below, that is ineligible as per section 17.5 used to come in 4D1. So we used to, we didn't use to add in all other ITC. But now the major change is first we have to add this ITC in all other ITC, that is here. And then we have to reverse in 4B1 so as to get at net ITC available. Okay, and here others means that all the other sections in which if we are ineligible, then we are required to enter ITC reversal in 4B2. Now, another point which is to be noted over here is that table 4B1, that is as per rule 48, 38, 42, 43 and 17.5 are those cases which are ineligible now and will always be ineligible. I'm just repeating it in Hindi. 4B1 हमारा उन चीजों से रिलेटेड है जो मेरा आज जो रिवर्सल्स मेरे हमेशा इनएलिजिबल रहेंगे, जैसे कि सेक्शन 17.5 है, वो उन चीजों के बारे में बात करता है जिसके लिए मैं कभी भी क्रेडिट अवेल करने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ. ऐसे ही रूल 38 जो बैंकिंग कंपनी से रिलेटेड है, 42, 43 जो हम पहले भी था सॉफ्टवेयर फॉर्म में था रिलेटिंग टू एग्जेम्प्टेड, अगर हम किसी चीजों पे इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स के रिलेशन में था तो हमें रिवर्स करना पड़ता था. तो वो 42 एंड 43 सेम है, रूल 38 बैंकिंग कंपनी से रिलेटेड है. एंड देन हमारे पास 17.5 बचा, तो 17.5 हमेशा उन चीजों से रिलेटेड है जिसका आईटीसी में कभी भी नहीं ले सकती. बट 4B2 दैट इज others will include those cases in which I am ineligible now, that is in current month. If I'm filing return of August 2022, so I'm ineligible in this month to avail its credit, but in coming months I may become eligible for that to avail the credit. So can we think about any of the case जिसके अंदर मैं आज ineligible हूँ इस month में, but आने वाले months में eligible बन जाऊँ. Okay, so उसके लिए we have 3-4 rules which we can see. वो है एक तो मेरा रूल है, वो है रूल सेक्शन है सेक्शन 16(2)(b). सो सेक्शन 16 हमें पता है कि एलिजिबिलिटी ऑफ आईटीसी से पर्टेन करता है, जिसके अंदर पहले हमारे पास 4 कंडीशंस होती थी कि जिसके बेसिस पे ही अगर वो फुलफिल हो रही है कंडीशंस तभी हम क्रेडिट ले सकते थे. तो उसमें से सेक्शन 16(2)(b it talks about the case. Let me show you on my screen. This is section 16(2)(b). So as per section 16(2)(b), a registered person cannot avail credit of input tax in respect of supply of goods or services or both unless he has received the goods or services or both. So इसके अंदर हमारे कौन से केसेस फॉल करेंगे, वो होंगे बेसिकली इन ट्रांजिट वाले. Taking an example, if on August, if we are talking about August, on August 30th, I purchased some goods, okay, and invoice was issued. So it will be coming in my GSTR 2B because supplier has uploaded that particular invoice in its GSTR 1. But as the goods were in transit and I received the goods at my place on 2nd September. So for the month of August, as per section 16(2)(b), I am not eligible to avail the credit. So I need to reverse this ITC in which head? I need to reverse in 4B2, that is others, section 16(2)(b). Similarly, section 16(2)(c) talks about the cases where I cannot avail the credit if the recipient cannot avail the credit if the supplier has not paid the tax to the government, okay, and tax is paid through 3B. So if it is not filed, so I cannot avail the credit of that. Also, this particular data will be coming in 4B2, that is others. Okay, because in this month the supplier has not filed the return, but maybe after he is filing his GSTR 1 in maybe September. So accordingly, in the coming months, I'll be becoming eligible for availment of this credit. So the important thing which is coming from here,
कि 4B1 में हमें वो क्रेडिट इनएलिजिबल क्रेडिट डालना है या उसकी रिवर्सल करनी है क्रेडिट की जो आज भी इनएलिजिबल है और जो हमेशा ही इनएलिजिबल रहेगा, जिसका एक है सेक्शन 17(5). बट 4B2 में हमें वो आईटीसी डालना है जो आज इनएलिजिबल है। उसके रीजंस हो सकते हैं सेक्शन 16(2)B, 2C, और ये भी हो सकता है कि रेसिपिएंट ने 180 डेज में पेमेंट नहीं की तो इसकी वजह से वो रिवर्सल कर रहा है, और एनी अदर केस ऑल्सो। तो इन ये केसेस में मेरा आज की डेट में रिवर्सल मुझे करना पड़ेगा इस मंथ के लिए, बट कमिंग मंथ्स में मैं इसका क्रेडिट अवेल कर सकती हूँ। तो जब मैं इसका क्रेडिट कमिंग मंथ्स में अवेल करूंगी तो दिस क्रेडिट विल बी एडेड बैक इन माय ऑल अदर आईटीसी and my 4D1, that is ITC reclaimed which was reversed under table 4B2 in earlier tax period, meaning जो ये अदर्स के अंदर मैंने पहले रिवर्स किया है, अब जब कमिंग मंथ्स में जब मैं इसको रिक्लेम करूंगी तो आई हैव टू शो दिस हियर। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। नाउ 4A हमारा आ गया, 4B आ गया। इन 4C वी आर गेटिंग नेट आईटीसी अवेलेबल। उसकी कैलकुलेशन सेम ही है जैसे पहले थी। 4A में से 4B हम अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो विल बी गेटिंग नेट आईटीसी अवेलेबल। 4D रिपोर्टिंग पर्पस के लिए है, उसका ऑल अदर आईटीसी पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। इसीलिए जो कमिंग मंथ्स में मैंने आपको बताया कि हम आईटीसी रिक्लेम कर लेंगे, तो उस केस में सिर्फ मुझे दिखाने के लिए, ताकि गवर्नमेंट को पता लग जाए कि मैं कौन सा आईटीसी है जो मैं रिक्लेम कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे ये यहाँ पे शो करना है। देन 4D2 ineligible ITC under section 16(4) and ITC restricted due to POS provisions. Now, when we open our GSTR 2B, there are two heads in that. Let me open GSTR 2B also. This is my GSTR 2B. In the same format, we open the 2B on the portal also. It is in the same format. Here I am getting two tabs. One is ITC available and another one is ITC not available. So ITC available is relating to all the all the credit which like the invoices which has been uploaded by the supplier, and there is no restriction in that for availment of ITC. So from this ITC, I have to identify that whether it is falling under section 17(5) or like rule 42 or rule 43 or section 16(2)B, 2C condition is not satisfied. But some ITC is coming in GSTR 2B which is already ineligible, which comes under a head ITC not available. Here you can see some ITC is coming which is coming under ineligible head. So this kind of ITC will be reported in my 4D2, that is ineligible ITC under section 16(4) and ITC restricted due to POS provisions. Now section 16(4) talks about the cases when like जो क्रेडिट अवेल करने की लिमिट होती है, अगर मेरी वो टाइमलाइन क्रॉस हो चुकी है और उसके बाद मैं क्रेडिट नहीं ले सकती, तो इन दोज केसेस ऑटोमेटिकली मेरा डेटा GSTR 2B के इनएलिजिबल हेड में जाता है, तो ये वहां आ जाएगा। और ITC रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू POS प्रोविजंस। अब POS प्रोविजंस के में क्या कहते हैं, वो ये है कि अगर जो है मेरा रेसिपिएंट की स्टेट और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर डिफरेंट है तो मैं उसका क्रेडिट नहीं ले सकती। तो इस केस के अंदर मेरा क्रेडिट जो है ऑटोमेटिकली इनएलिजिबल हेड में आएगा ऑन द बेसिस ऑफ GSTR 1 फाइल्ड बाय द सप्लायर्स। नाउ इसके लिए जो इन्होंने जो गवर्नमेंट ने वर्ड यूज किया है वो इंट्रा स्टेट सप्लाईज यूज किया है, because taking an example, इसी के लिए ITC restricted due to POS provisions. Suppose I am registered in Delhi and my company is registered in Delhi and I am going to say UP for any seminar, and there I am like staying at a hotel. So that hotel will charge CGST and UP का SGST, UP का GST, that is state GST जो होगा वो UP का होगा। बट अब जब वो GSTR 1 अपनी फाइल करेंगे तो मैं UP का GST दिल्ली और मैंने अपने दिल्ली का GST उनको दिया है होटल में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो वहां पर मैं दिल्ली में आकर UP का GST क्लेम नहीं कर सकती। तो इसीलिए ITC रिस्ट्रिक्टेड होता है इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाईज के इन केसेस में जहां पर मेरी रेसिपिएंट की स्टेट और POS डिफरेंट होता है। तो अगर ऐसा कोई केस है तो वो मेरा 4D2 है।
Okay, so I hope the table is clear to everybody. Now we are moving to our WebGST software, and in this I'll be showing you that how we have tackled all these things in our software, and अब आपको return कैसे file करनी है. ठीक है, the people who are our existing user must be knowing that they have to just log in into the software, फिर business vertical आएगा, they have to click on it, and then ये competition page जो आपकी screen पे visible है ऐसा visible हो जाता है. But who are not our users, for them I'm just explaining again. जब आप WebGST सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको अपना बिजनेस वर्टिकल फर्स्ट टाइम क्रिएट करना पड़ेगा. जब आप अपना बिजनेस वर्टिकल मींस द वर्टिकल फॉर व्हिच यू आर फाइलिंग योर GSTR 3B रिटर्न और एनी अदर वर्क यू आर डूइंग इन द सॉफ्टवेयर, तो वो आपने जब क्रिएट कर लिया उसको डबल क्लिक अगर आप करेंगे तो आपका मंथ एंड ईयर यू हैव टू सिलेक्ट, एंड देन दिस कॉम्पिटिशन लाइक दिस विल बी ओपन. Now, the process of entering the data in software is same. Like we are entering our data in respect of purchase, sales till now. For that you can use Excel also, Tally also, or any other mode which you are using for importing the data in the software. Now once we have imported this data in software, as you can see over here, our computation is divided into 3 parts. First one is sales. Here our sales data is coming, all the data which we have inserted. Now second part is purchases. Now here my purchase data is coming, and after sales and purchase I have made all the adjustments which I am required to make, and then after that in the end I am getting net liability payable. Okay, so now in this session we are talking about purchases only, because there is no change in like my supplies. It is same as we were doing earlier. So now talking about purchases, one thing is that from August month we are generally taking all the actions on the basis of GSTR 2B, because we have to report all the data on the basis of GSTR 2B. So we have to open our accounts versus GSTR 2B form given on the right hand side. And when you open it, you can see a screen, एक reconciliation statement kind of screen open हो जाएगी, जिसमें on the left hand side accounts data is coming and on the right hand side GSTN data is coming. Now you must be knowing that our reconciliation works on the actions. Like we have firstly our data is divided on the basis of GSTN. Suppose I have 10 suppliers, so all of my suppliers name and GSTN, like you can see over here, will be coming here. After that, all the invoices or notes maybe pertaining to that party will be appearing below. And then we will be matching our accounts data and GSTN data, like the data which are coming on side-by-side basis, and then on that we can take certain actions, and from there only we can identify that whether my data of accounts and GSTN are same or it is different, or maybe my invoice is not coming in GSTN 2B, or maybe the other case, maybe it is coming, it's not coming in my accounts book. So there can be number of cases. So we are discussing all the cases one by one. First is matched data. Matched data means that the data which I have inserted in my accounts and the data coming from GSTN are exactly same. Like all the things are matching, the taxable amount, value, all these things are matching. So in this case, if I have this kind of scenario, I have I can see, you can see that automatically accept action is coming over here, meaning thereby that we are considering that as your data is totally matching, so we can avail the credit because this invoice is coming in my 2B also, in my accounts also, and data is also matched. But talking about August month, because these functionalities are available from August month only. One more thing I would like to tell you over here is that you must be knowing that in our GSTR 2B data gets carry forwarded if we don't take action on that. So the earlier months data which were getting carry forwarded, on which we haven't taken any action, will work on the same basis as as it was working earlier.
So there will be changes in the actions appearing like from August month only. Here you can see 3 actions are coming except deferred under section 16(2)(b), deferred under section 16(2)(c). So I have already told you कि 16(2)(b) के अंदर deferred तब होगा जब मेरे पास goods receive नहीं हुए हैं, in transit है, या फिर 16(2)(c) के अंदर केस वो होगा जब मेरे को जो सप्लायर है उसने GSTR 3B फाइल नहीं की। तो ऐसा हो सकता है कि मेरे अकाउंट्स में और GSTN में दोनों साइड डेटा आए पर फिर भी मैं उसको एक्सेप्ट ना करूं और डेफर कर दूं। ओके, सो इट इज ऑन अस। तो इसलिए यहाँ पर तीनों एक्शंस आ रहे हैं। तो जो एक्शन आपसे रिलेटेड है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, और इन केस आपको एक पार्टी पे मल्टीपल एक्शंस लेने हैं तो दैट इज आल्सो अलाउड कि आपको सिंगल ना लेने पड़े। आप जो है रिक्लेम डेफर्ड जैसे अगर आपको लेना है तो आप इस पार्टी के सारे इनवॉइसेस पे सिंगल क्लिक पे एक बार में डेफर ले सकते हैं। ओके, ऐसे ही डेफर आप 16(2)(c) के अंदर सिंगल क्लिक पे ले सकते हैं, ऐसे ही आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट मिसमैच डेटा। सो मिसमैच डेटा means that the data is, which is coming as per accounts and GST, there is difference in the amount maybe or value or maybe taxes or invoice date, invoice number, any kind of difference if it is there, then the data will be coming in mismatch. So in mismatch, earlier the actions which used to come was accept and modify. So this is my July month invoice, that's why in that accept and modify action is coming. If I talk about any invoice pertaining to August, here you can see here also I'm just getting accept action. Now I'm not giving modify action because we are assuming that we cannot take the credit on account basis, obviously, so we have to accept the data which is coming in GSTR 2B, and if in case the data coming in GSTR 2B is not correct, then we have to make adjustments accordingly, or we can defer the data also, defer the invoice also. Next is exist in accounts data but not exist in GSTN. So in this case, I am not giving any actions to you because you cannot avail any provisional credit which we used to do earlier. Okay. Next is GSTN data. Now let me show you August month invoice. Here you can see accept action is coming. If my data is correct, I have to take accept action. मतलब अगर मेरा GSTN पे जो डेटा आ रहा है वो करेक्ट है, मुझे एक्सेप्ट एक्शन लेना है। अगर वो डेटा गलत है, सपोज किसी ने गलती से मेरे GSTN पे अपलोड कर दिया है, तो रिजेक्ट एक्शन लेना है। Deferred under section 16(2)(b), as we have already discussed, किस केस में 2B और 2C में deferred action लेना है। Ineligible 17(5) and ineligible others. So if any of my invoice is coming or note is coming in like from GSTN and that data is not coming in accounts, so I don't know, like currently when I am accepting the data, I don't know that whether this invoice is ineligible or not. So we need to specifically select कि ये ineligible है या नहीं। So यहाँ पर हमें एक चीज जो ध्यान रखने की है वो ये है कि इनएलिजिबल मेरे दो तरीके से हो सकते हैं। एक इनएलिजिबल जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी सेक्शन टेबल 4 के D2 के अंदर, that is ineligible ITC under section 16(4) and ITC restricted due to POS provisions. So ये वो ineligibility है जो मुझे 2B में ही मिल जाएगी, जिससे मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगी कि मेरा जो है क्रेडिट मुझे इसका अवेलेबल ही नहीं। और फिर उसके बाद जो मेरे पास 2B के अंदर एलिजिबल क्रेडिट आ रहा है, उसमें से मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि उसमें से 17(5) पे कौन सा इनएलिजिबल है या किसी और केस में कौन सा इनएलिजिबल है। तो जैसा केस होगा मुझे वो सिलेक्ट करना है एंड आई हैव टू सेव द डेटा। Then match with round off, it works on the same basis as my mismatch data works. So round off means that there is slight mismatch maybe in the tax amount. Okay, as you can see in this invoice, my tax amount over, just a second, my tax amount, there's a slight difference in the invoice number. That's why we have automatically identified on the basis of auto intelligence that these two invoices are same. Okay, and auto intelligence can be in the case where there is slight difference in my taxes also. So in that case, my data will be coming side by side in this color, and I can identify that this is auto intelligence case. And here also you can see accept action is automatically coming.
But in case August month invoice is there, then I have option to defer it or just accept it. Now after we have seen that all the data is coming over here. So after that, I have taken actions. So currently I'm not taking any action. The accept data is coming, accept action is coming automatically in the invoices which are matching. So I'm just saving the data. So I'll just save the data after taking the requisite actions which I'm which I should take. So in this case, what we are assuming is that in case you have specifically taken deferred action, मतलब अगर मैंने GSTN 2B के डेटा पे डेफर्ड एक्शन जानबूझ के ऐसे ड्रॉप डाउन में से जाकर सिलेक्ट करके अगर ले लिया है, तो देन इट इज ओके, जो मैंने एक्शन लिया वो चला जाएगा. बट अगर मैंने एक्शन नहीं लिया है, सपोज आई एम लीविंग इट ब्लैंक, मैंने कुछ इनवॉइसेस पे एक्शन ले लिया, बाकी छोड़ दिए हैं, तो उस केस में वी विल अज्यूम दैट दीज आर डेफर्ड अंडर सेक्शन 16(2)(b and we will carry forward those invoices to the next month. Okay. Now अब मैंने actions ले लिए हैं, so this is my view completed transaction form. Okay, in this I can see the data which is matched, which is not matched, and I have taken accepted action. One more point I would like to tell you over here. जिन invoices पे मैंने deferred action ले लिया है current month, for August month जिन invoices पे मैंने deferred action ले लिया है, यहाँ पर जाकर just a second, यहाँ जाकर ठीक है, मैंने यहाँ ले लिया deferred under section 16(2)(b. इसका मतलब ये है कि I am saying it is reversal under 4B(2). So अगर मैंने इसको रिवर्स किया है, अब कमिंग मंथ्स में जाकर मुझे इसका क्रेडिट भी लेना होगा वापस, जिस मंथ्स में मैं एलिजिबल बन जाऊंगी. So in that month, when you will open your GSTR 2B, like this form, accounts versus GSTR 2B, suppose I become eligible to avail the credit in September month. तो अगर मैं सितंबर मंथ की GSTR 2B वर्सेस अकाउंट्स फॉर्म ओपन करूंगी, वहां मुझे इस इनवॉइस के सामने रिक्लेम बटन ही दिखेगा. What is the meaning of reclaim? Reclaim का मतलब ये है कि we have identified कि अब मैं इस इनवॉइस को का क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल हूँ, तो उस मंथ की GSTR 3B के अंदर टेबल 454 सबसेक्शन 5 इस टेबल में ऑल अदर ITC में ये अमाउंट ऐड हो जाएगा, एंड 4D1 ITC रिक्लेम्ड में मैं इसको दिखा दूंगी ताकि मुझे पता लग जाए कि इतना अमाउंट ऑल अदर ITC में एड बैक हुआ है, क्योंकि हमारा ऑल अदर ITC तो GSTR 2B से ही ऑटो पॉपुलेट होता है, तो वो तो वैसे ही हो जाएगा. बट उससे ज्यादा अगर मैं क्रेडिट ले रही हूँ तो वो ऑब्वियसली रेड कलर में आता है ऑन GST पोर्टल, तो इसीलिए मुझे उतना ही अमाउंट ऊपर दिखाना है और उतना ही नीचे इन D1. ओके, now moving to our software. So this is the change in my GSTR 2B form, accounts versus GSTR 2B form. Now moving to my computation. In computation, we have divided our purchase into different parts. One is supplies from registered person, another is unregistered person, then import of goods, import of services, effect of debit credit. So if we talk about supplies from registered person, when we double click on this, you can see certain actions are coming over here. That is accepted, reclaim, reverse charge, no action taken. So please see these actions properly because it will impact the way we are preparing our GSTR 3B from software. Now, talking about the actions which used to come earlier there was an option of provisional. Now we have given a reclaim button. This reclaim button will show the data when we are reclaiming the credit in the coming months. So accepted obviously shows the data on which we have taken accepted action. Reverse charge cases are those my purchase in which reverse charge flag is yes. It may consist of the data which is coming from GSTN, and on that if we have taken action on reverse charge invoice, or it may contain my accounts data also if there is no action taken on the GSTN data. Then no action taken. Till the time I have not taken any action in the software, the data will come in, no action taken. Current month invoices move to next month is similar as it was working previously. Suppose if I have certain invoices on which I have taken action, but certain invoices are left on which credit is not taken till now. So those invoices will appear in current month invoices move to next month.
and credit not yet taken for previous month will show the invoices and notes for previous month's data for which are being carried forwarded till now, पर उस पे मैंने इस month भी credit नहीं किया. Now talking about the last 5 sections which you can see on the screen, these are very important because these are relating to ITC reversals. तो जो हमारे ऊपर के 4 थे, accepted plus reclaim plus reverse charge. So the sum total of all these 3 will appear on my main screen computation page, and the current month invoices are moved to next month, and credit not yet taken for previous month का कोई impact नहीं होगा हमारे return पे. It is just for the software purpose. तो ये next month carry forward हो जाएगी. बट रिवर्सल्स का इम्पैक्ट 3B पे भी जाएगा, तो उसके लिए वी नीड टू सी कि व्हाट ऑल डेटा इज कमिंग ओवर. सो फर्स्ट इज रिजेक्टेड. अगर मेरा जीएसटीएन साइट पे कोई इनवॉइस आ रहा है, ठीक है, जो मैंने केस बताया था जिसके अंदर मुझे लग रहा है कि ये गलती से अपलोड हो गया ऑन माय जीएसटीएन एंड इट इज नॉट पर्टेनिंग टू मी, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसको रिजेक्ट कर सकती हूँ. एंड इन केस आई हैव टेकन रिजेक्टेड एक्शन, सो इट विल शो अंडर हेड रिजेक्टेड. Now important point over here is that why I am showing this rejected data. Earlier I was not taking this thing in my this computation. Now why I am taking this? Because now I have to add this because मेरा 2B का जो all other ITC है वो 2B से generate हो रहा है, तो इसमें वो invoice आ गया होगा जिसको मैं reject करना चाह रही हूँ. तो all other ITC में वो rejected वाला invoice already included है, तो मुझे उसका reversal करना पड़ेगा. एंड रिवर्सल कहाँ हो सकता है, 4B2 में, अदर्स. ऊपर क्यों नहीं हो सकता 4B1 में? क्योंकि वो रूल 38, 42, 43 और सेक्शन 17(5) से रिलेटेड है, और इस केस में ये चारों में से कोई भी मेरे पास केस नहीं है, तो हो जाएगा अदर्स. ओके, इसीलिए मैं अपना रिजेक्टेड एक्शन का डेटा जो है कंपटीशन में ला रहा हूं. नाउ इनएलिजिबल 17(5) एंड इनएलिजिबल अदर्स. अगर मैंने किसी इनवॉइस पे इनएलिजिबल 17(5) वाला एक्शन लिया तो वो इनएलिजिबल 17(5) में दिखेगा, इनएलिजिबल अदर्स वाला एक्शन लिया तो वो इसमें दिखेगा, एंड अकॉर्डिंगली इट विल शो इन माय दीज टेबल्स. अब अगर मेरा कोई भी इनएलिजिबल आईटीसी है वो सेक्शन 17(5) से रिलेटेड है, हियर इट इज टू बी लाइक प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस थिंग, क्योंकि इसकी वजह से आपकी जो है फॉर्म के सबमिशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा. अगर आपका आईटीसी का रिवर्सल है और आपको लगता है वो इनएलिजिबल है, तो वी हैव टू आइडेंटिफाई नाउ कि वो सेक्शन 17(5) में इनएलिजिबल है या किसी और रीजन की वजह से इनएलिजिबल है. बिकॉज प्रैक्टिकली क्या होगा कि व्हेन वी आर सिलेक्टिंग द इनएलिजिबल टैग, मे बी हम हो सकता है कि 17(5) की जगह इनएलिजिबल अदर्स सिलेक्ट कर दें, पर उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि माय डेटा विल गो देन इन 4B2, दैट इज अदर्स. बट जबकि वो था 17(5) का, तो इट शुड गो इन 4B1, तो मेरा डेटा जो है वो गलत सेंड हो जाएगा. तो इसलिए वी शुड पे अटेंशन व्हाइल सिलेक्टिंग इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. ओके, जो मेरा इनएलिजिबल क्रेडिट है वो पहले ऑल अदर आईटीसी में ऐड होगा, देन वो फिर नीचे रिवर्स होगा. ऑल अदर आईटीसी में तो जैसे 2B से डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर आया उसमें होगा ही, तो मेरा सिर्फ रिवर्सल हो जाएगा यहाँ पर. अगर वो 17(5) है तो 4B1 और कोई और केस है तो 4B2. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, डेफर्ड अंडर सेक्शन 16(2)B. अगर मेरा 2B के अंदर या 2C के अंदर कोई डेटा कैरी डेफर हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा? अगेन इट्स इम्पैक्ट विल बी ऑन 4B2 अदर्स. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि 4B2 के अंदर मेरा डेफर्ड का डेटा जाएगा, तो यहाँ वो रिवर्सल हो जाएगा और मेरे को नेट आईटीसी अवेलेबल जो मिलेगा 4A में से 4B माइनस करके नेट आईटीसी मिल जाएगा. सो दिस इज अबाउट माई कॉम्पिटिशन. All other things are working in the same way जैसे वो पहले कर रही थी, जैसे कि मेरा इंपोर्ट का डेटा है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, डेबिट क्रेडिट नोट, कंपाउंडिंग एंड अदर nil rated cases और नॉन जीएसटी केसेस. सो सेल्स और परचेज के बेसिस पे मेरा नेट आईटीसी यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे वो पहले होता था सेम वे वही होगा एडजस्टमेंट्स. नाउ टॉकिंग अबाउट फाइलिंग ऑफ GSTR 3B फ्रॉम द सॉफ्टवेयर. I have already entered my purchases. I have already taken the actions. Now, when I'll click on generate GSTR 3B, a new form like this will be displayed to you. There are certain changes in this form. Earlier, it was a different form. Now, some changes are made in this. First of all, we are getting ITC as per GSTR 2B.
So this data, these 4 heads, we have the data we have taken from our 2B, which is coming in our 2B, and it will be auto-populated on the basis of the data coming in 2B. That is like all other ITC from registered person, inward supplies from IST, inward supplies liable to reverse charge, and import of goods. So in all these heads, my data will be auto-populated. Now, after that, what I'm doing is I am taking ITC available, and from that I am subtracting the reversal amount so that I can get net ITC available, which will be sent in my GSTR 3. Now, in ITC available, here ITC on domestic supplies including deferred credits. So this is my which ITC? This is my all other ITC. Okay, this part. So this part is coming here for A here in ITC on domestic supplies including deferred credits. So why we have used deferred credit over here? Because in case we are deferring any invoice, then also we are adding it back in our all other ITC, and then after we are reversing it. Talking about import of goods, import of services, the data will be same. Inward supplies liable to reverse charge. So in inward supplies liable to reverse charge, I have 2 options. There can be cases in which my invoices are coming on GST and portal and I am accepting it. So that data will be coming in available in 2B. But practically there are some cases when my invoice is not coming in 2B. But obviously I am paying it on reverse charge basis. So I need to pay the liability and then I can take the credit. So for that purpose, if my any invoice is not coming in 2B, but I want to enter it, like I am entering it in my accounts book, so I can pay. My liability will be increased in first table of like where I show the liability part, and then my credit, I can get the credit for that also in as per accounts. That data will appear in this head. After that, if I am getting any inward supplies from ISD, that will come, and then I'll get my total ITC. After that, I have ITC reversal. Now we have already talked about B1 part, this like this part. B1, that is as per rule 38, 42, 43 and section 75. So if that is the case, we need ineligible ITC as per section 17.5 will be auto-populated from the software, like from the entries or action which you are taking. So all other data like 38, 42, 43 is to be entered manually because we don't capture such data right now, and it will be entered manually. And after that, we have shown others. This is important. This others reclaimable ITC, which will go in my 4B2, that is others. Okay, in that, what I am taking on account of credit notes in respect of inward supplies. Here it is very important to understand that earlier also, like few months back, there was some clarification was also issued that if I have some credit notes, like the debit note was issued and I'm accepting it. So for that, for reversing the credit, I have to enter those credits in my others, that is in my reversals, and I should not take like adjustment in my all other ITC. So similarly, now in all other ITC, there is no impact of such notes. Okay. Let me just show you. That is on account of credit notes in respect of inward supplies. It means inward supplies के अगर मेरे कोई credit notes हैं तो उसका impact ऊपर नहीं आएगा all other ITC में, मुझे उसको reverse करना पड़ेगा. This is very important. So I should not make the adjustment for that, and I should report it in the software here. Okay, तो जो भी मेरे credit notes का impact है वो automatically यहाँ आ जाएगा. And in case I have not made the payment within 180 days, so I need to reverse it. वो यहाँ आ जाएगा. Section 16(2)(b)(2)(c) के जो deferred data है जिसपे मैं इस month credit नहीं ले रही, वो इनके सामने आ जाएगा. And for reasons not covered anywhere else, इसमें कौन से reasons आएंगे? अगर suppose GSTN से कोई invoice आ रहा है, मैं उसको reject कर रही हूँ वो, या फिर मैंने पिछले months में कोई extra ITC avail कर लिया था, but अब मुझे वो गलती से कर लिया तो I need to reverse it, so that credit will come in for reasons not covered anywhere else. So the sum total of all these 4-5 heads which I have shown to you will go in my 4B2, that is others. मतलब others में मेरा कौन कौन सा data जा रहा है? 17.5 के अलावा कोई और ineligibility है वो जो है section 16(2)(b)(2)(c),
कोई क्रेडिट मैंने प्रीवियस मंथ्स में एक्स्ट्रा अवेल कर लिया था, मुझे रिवर्स करना है इस मंथ में वो, और इसके अलावा मैंने कोई इनवॉइसेस रिजेक्ट कर दिए वो, और मैंने परचेज का कोई मैंने कुछ क्रेडिट पहले ले लिया था पर उसकी पेमेंट नहीं की अभी तक 180 डेज में, तो उसका रिवर्स। सो ये सारा डेटा मेरा 4B2 में चला जाएगा। ओके, एंड देन आई विल गेट नेट आईटीसी अवेलेबल। रिवर्सल माइनस करने के बाद टोटल आईटीसी में आई विल गेट रिवर्सल. Then I have other details, that is ITC reclaimed. This last three points are relating to this 4D 2 ineligible ITC under section 16(4) and POS provisions जो मैंने आपको बताया कि 2B में ineligible के जो head में होते हैं ये 4 है, and जो reclaim है next month में मैं reclaim कर रही हूँ, जो ऊपर reverse किया था 4B2 में, that will come in my 4D1. Now, after that, after all these things, I can checking all these things. I have to click on Save JSON, and a summary will be displayed to you in the same way as it will be. The data will be sent on the portal. We need to first check the data thoroughly that my table 4 is correct or not, because on the basis of net ITC available, only my credit ledger will be updated. And so I need to check all the data properly, and if it is correct, I need to click on proceed and then save the data on GST portal, and then after doing offset, I can find my return. Now let me just simplify this form for you once again. अब अगर हम इस फॉर्म को देखेंगे तो मेरा इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, रिवर्स चार्ज, ISD ये सब सेम है, सिर्फ ऑल अदर आईटीसी में चेंज है. ऑल अदर आईटीसी में क्या चेंज है कि सेक्शन 17(5) का रिवर्सल जिसका मैं करूंगी वो मुझे ऊपर ऐड बैक करना है, या कोई और भी रिवर्सल्स है वो मुझे 5th वाले में ऐड करने हैं पहले, फिर लेस करने हैं. जो सेक्शन 17(5) का इनएलिजिबल आईटीसी में पहले 4D1 में दिखाती थी, दिस इज आवर करंट फॉर्म, इसमें जो मैं दिखाती थी 17(5), अब वो मुझे यहाँ नहीं दिखाना, वो क्योंकि ऊपर आ चुके हैं ऑलरेडी. यहाँ मुझे सिर्फ रिक्लेम दिखाना है, और इनएलिजिबल जो 2B में इनएलिजिबल आ रहा है वो दिखाना है. So this is about my GSTR 3B, the changes which are made in GSTR 3B, and how we have tackled all the things in our software. I hope it is clear to everybody now. So if you have any queries, then we can take that. So you can post your queries if you have any queries. And if you want me to explain it again, so I can do that. Just a second, let me see your queries. Oh, just a second. So one question is goods in transit and taken purchase in next month, then it will show in table B2. So I am showing my screen again, just a second. Here जिस मंथ में मेरा ट्रांजिट में है तो मेरा 4B2 में यहाँ जाएगा. सपोज अगस्त मंथ की हम बात कर रहे हैं, और अगर जब सितंबर मंथ में मेरे पास आ गए हैं गुड्स, तो उस मंथ में मैं ऑल अदर आईटीसी में उसको ऐड कर दूंगी, और 4D1 में हेड में दिखा दूंगी कितना आईटीसी मैंने रिक्लेम किया. Kindly explain more about D1. So D1 basically deals with ITC reclaim. तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो टेबल 4B की के बारे में है, B1 और B2 के बारे में है, वो ये है कि 4B1 उन इनएलिजिबल क्रेडिट्स के बारे में बात करता है जो मेरे हमेशा इनएलिजिबल रहेंगे, कभी भी मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं बन सकती. दे आर इनएलिजिबल फ्रॉम द स्टार्टिंग इटसेल्फ. बट अदर्स में वो वाले क्रेडिट रिवर्सल्स आएंगे जिनके लिए मैं आज इनएलिजिबल हूँ, पर मैं उनके लिए बाद में एलिजिबल बन सकती हूँ, जिसके एग्जांपल्स हमने लिए सेक्शन 16(2B 2C, पेमेंट नहीं की हो. तो अब जब मैं नेक्स्ट मंथ्स में, कमिंग मंथ्स में जब मैं उसके लिए एलिजिबल हो जाऊंगी, तो ऑब्वियसली मैं उसका क्रेडिट वापस अवेल तो करूंगी, बिकॉज मैं वो रिवर्स कर चुकी हूँ अर्लियर. तो मैं क्या करूंगी, अपने ऑल अदर आईटीसी में उस क्रेडिट को क्लेम कर लूंगी 4A5 में. पर मेरे को कहीं तो उसकी बाइफरकेशन दिखानी है कि मेरा ये एक्स्ट्रा क्रेडिट क्यों आ रहा है,
क्योंकि ऑल अदर आईटीसी तो मेरा 2B से बनता है, तो 4D1 में मैं उतना आईटीसी दिखाऊंगी जो पिछले मंथ से रिलेटेड है, जिसको मैं रिवर्स कर चुकी हूँ 4B2 में, पर अब रिक्लेम कर रही हूँ. ओके. Can we claim all pending ITC in this month? If you are eligible for that, like if you have taken any actions for whatsoever reason, but you are actually eligible for taking that credit, you can. But obviously portal पे जो है वो red color में highlight होगा अगर उसका credit 2B से ज्यादा होगा तो आपके पास उसकी justification होनी चाहिए कि why you are availing the excess credit. July pending transit where we can show. तो आपकी जुलाई से ट्रांजिट पेंडिंग है, अभी तक नहीं आई, तो आई थिंक यही क्वेश्चन है. तो इफ यू कैन अगेन प्रॉपर्ली बता सको तो दैट वुड बी beneficial. If I'm not able to identify ITC in 2B, so I think you have to do the working to identify कि कौन सा ITC आप ले सकते हो, कौन सा नहीं ले सकते. उसी के बेसिस पे ही आपको अपनी वर्किंग करनी पड़ेगी. All other ITC can allow to modify the portal always. I didn't get the question. Next question is July 22 pending ITC received in the month of August. Can we claim all pending ITC with August 2022? August 22. तो in case अगर आपने जुलाई के रिटर्न में उसका क्रेडिट अवेल नहीं किया था क्योंकि तब आपके पास गुड्स नहीं आए थे, तो अगर आपने तब अवेल कर लिया तो अब आप दोबारा नहीं कर सकते. पर अगर आपने तब नहीं अवेल किया है वो इसी कंडीशन के बेसिस पे और अब वो आ चुके हैं, तो तब आप उसको इस मंथ अवेल कर सकते हो ऑब्वियसली. पर वही आपके पास उसके जस्टिफिकेशन होने चाहिए क्योंकि वो डेटा आपका ऑल अदर आईटीसी से 2B के डेटा से ज्यादा दिखेगा क्रेडिट, तो आपके पास उसका बस प्रूफ होना चाहिए कि व्हाई यू आर अवेलिंग मोर क्रेडिट. So how all other ITC can allow to modify the portal always? I think you are asking कि क्या हम changes कर सकते हैं या नहीं. Yes, we can make the changes in the heads which are coming in all other ITC in this table 4A. पर obviously वो जैसे हर बार मैंने बताया कि different amount होता है तो वो red में highlight. This question, supplier uploading credit note in the 4B2 where we have filed the same in our GSTR 3B. Can you please explain it a little bit more? Next, just a second. I'm trying to answer all the questions. Just a second. Let me see if any question is pending. I think that's all for today. I think that's all for today. Thank you. Thank you for joining us. In case any of the question is left, please you can send us mail us on the given ID. And just a second, I'm
I'm sharing the screen on which you can on the ID on which you can send us the question, and we'll definitely try to reply you back. Thank you for joining us in today's session. Thank you.